Good morning and welcome to today's class. Today we have to take the second lecture of semiconductors, that is semiconductor devices. And in previous lecture we have discussed very elementary things like the types of solids which we have. That is something, some category is semiconductor, some category is conductor, and something is insulator. Insulator does not allow current to pass through it, and conductor definitely allows current to pass through smoothly, and semiconductor is basically an insulator but at certain specific condition, physical condition, that could conduct electricity also, and that is why they are called semiconductor. Resistivity, conductivity, that we have already discussed then all the points, okay, that what are the corresponding conductivity, resistivity, etc. Today we have to discuss the types of semiconductor. Okay, because this chapter is semiconductor, we have to know types of semiconductor. They are intrinsic and extrinsic. Intrinsic and extrinsic. There are two types of semiconductor. This is extrinsic. And this is intrinsic. तो एक्सट्रिंसिक के मतलब किसी तरह से एक्स्ट्रा, बाहर से एक्सटर्नल मामला है, कोई ना कोई चीज बाहर से भी ऐड करने वाली चीज है. इंट्रिंसिक मतलब अपने आप में ही वो सब कुछ है. तो दैट वी कॉल द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. ओके, वी विल टेक वन बाय वन व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स. ऑल्दो आई थिंक दिस इज नॉट प्रॉपर्ली विजिबल, आई एम जस्ट semiconductors. Okay, now I think it is clearly visible. Semiconductors, types of semiconductor, and we have to take intrinsic semiconductor first. What is an intrinsic semiconductor? Intrinsic semiconductor. It is a natural or pure semiconductor. It is a natural or pure semiconductor. Number one. Number two, at the temperature T equal to 0 Kelvin, it is basically an insulator. आप ध्यान दीजिएगा कि अगर 0 डिग्री केल्विन अगर किसी का टेम्परेचर हो तो उस पे जो जिसको हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं, दे आर बेसिकली इंसुलेटर. वो सेमीकंडक्टर नहीं है, कोई कंडक्टिविटी उसमें नहीं हो सकता है, तो वो इंसुलेटर. तो दो पॉइंट्स है. व्हाट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? इट इज अ नेचुरल सेमीकंडक्टर, pure natural or pure semiconductor. Number two, at the temperature T equal to 0, it is basically an insulator. Number three, at temperature T greater than 0 Kelvin, some electrons can reach
conduction band from बैलेंस बैंड। ये खास बात होता है। कल हम लोग ने, आपको याद करिएगा, इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी बैंड थ्योरी। इन एनर्जी बैंड थ्योरी वी हैव सीन दैट फॉर energy is always considered to have two bands. One is your valence band and other is your conduction band. Valence band always have constant the number of electrons. That is, they always have one thing we must know, that is always valence band have filled orbitals, filled cells, energy levels, and whereas the conduction band have partially filled energy levels, and therefore there is every scope of having free electrons roaming in conduction band, which is responsible for your conduction of electricity. Okay, and therefore at 0 degree Kelvin it is totally uninsulated because no electron is found in the conduction band. There is no electron at 0 degree. It is basically insulated, but at temperature T is greater than the 0 degree Kelvin, some electrons can reach the conduction band from valence band. Okay, and how they reach, what is the procedure, that if electron can leave from to conduction band from valence band, what is left behind, वहां पर क्या रह जाता है जब एक इलेक्ट्रॉन कूद के चले जाते हैं आपके कंडक्शन बैंड में, तो वैलेंस बैंड में भी कुछ ना कुछ चीज रहना चाहिए। क्या चीज रहेगा, क्या चीज बचेगा, वो चीज हम लोग कहेंगे कि कोई ना कोई अब कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोवैलेंसी से कनेक्टेड है। I must tell you what are the natural semiconductors. They are basically carbon based semiconductors. Not we take pure carbon, but other very similar structure like silicon and germanium. They are the two very fundamental elemental semiconductors. Okay, and intrinsic also. The next is the functioning of intrinsic semiconductor working or functioning of a natural or intrinsic semiconductor. Working or functioning of natural or intrinsic semiconductor. So we take the example of germanium. We take its covalent, tetravalent covalency. You have this type of structure. A big mesh, or what we call just like a spider type something. You can see this is just like spider and or mesh, जाली टाइप का कुछ दिखता है। ये सारे कौन से एटम है, जर्मेनियम एटम है।
they are all bound with each other with covalency. ये covalency में बंधे हुए हैं, and it is tetravalent. Therefore, 4 electrons are there in their valence band. आप देख सकते हैं सभी में 4 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 and so on. And therefore every germanium atom has 4 electrons each, and they are bound with covalency. Covalent substance. दिस इज डेफिनेटली अ कोवैलेंट सब्सटेंस. तो अब इसमें क्या होता है कि आपने देखा कि जब 0 डिग्री केल्विन की बात करेंगे तो दीज आर द वैलेंस स्टेट, all the atoms are completely filled or they are in the stable bounded state. How they are bound? They have a very strong covalent bond like this. ठीक. अब इसको गर्म कर दिया जाए, गर्म कर दिया जाए, थोड़ा बहुत इसमें टेम्परेचर आ जाए तो कोई ना कोई इसमें थर्मल एजिटेशन स्टार्ट होगा, तो एक न एक कोई कोवैलेंट बॉन्ड मान लीजिए टूटा, एक कोवैलेंट बॉन्ड टूट जाता है तो व्हाट हैपेंस, ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है, दैट बिकम्स फ्री. तो ये जगह जो बच जाता है दैट इज योर होल, दैट बिकम्स योर होल. Remember, whenever you have such type of system where electrons are found to electrons are displaced due to the addition of heat to substance, what happens? Some electrons get themselves free, and the place from where electrons move away, that becomes a positively charged space, and this is your electron, this is negative. Okay, and this is responsible for your energy transmission or conduction of electricity. तो ये सीधा सीधे आपका कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा. ऐसे एक नहीं कई एक हो जाता है, तो एक तो ये हो जाएगा. अब देखिए यहाँ पे होल बना, तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज एम्प्टी स्पेस है दैट वी कॉल एज होल. Then next we discuss the formation of holes. Formation of holes. When due to increase in temperature, some covalent bonds are broken, then electrons are liberated. Electrons are liberated in the place of electrons. Positively charged empty space is created, or since electrons are there, that are created, empty space are created, which are called holes. Now this is the concept of holes. I am just taking with a closer look. You can just see formation of holes. When due to increase in temperature some covalent bonds are broken. Okay,
then electrons are liberated, that is they get themselves free. Okay. In the place of electrons, positively charged empty spaces are created, and which are called as holes. Therefore, holes are something which has no mass, but it has some charge, that is positive charge. Why? Because it is the space which is found once electrons move away, and the leaving behind space, when that space is already available, where electrons was once upon a time that remain, तो इलेक्ट्रॉन के जगह जहां से इलेक्ट्रॉन कभी रहा करते थे, तो उस एरिया में क्या बन जाता है, पॉजिटिवली चार्ज एम्प्टी स्पेस बन जाता है. उस एम्प्टी स्पेस को होल कहते हैं. होल का मतलब है छेद. Hole means just it's orifice, a very small empty space, and that hole itself is positively charged object, positively charged particle, what we call quasi particle, which has no mass, but it has some definite motion. And number of holes and those of electrons must always be equal. This is also one of the very important property of natural semiconductor. तीन प्रॉपर्टीज मैं पहले बताया था, तो ये चौथा प्रॉपर्टी भी ऐड कर लीजिएगा कि इन अ नेचुरल सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इक्वल. तो यहाँ पर अभी जितने भी आप देखा, यहाँ पर कोई भी चीज आपने ऐसा नहीं देखा कि जिसमें कोई एडिशनल चीज डाला गया, बट रादर एवरीवेयर यू हैव सीन दैट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स are there intact inside the object, and atoms only some of the electrons, due to the excitement that is created due to the import of heat. तो हीट से या थोड़ा सा गर्माहट से क्या होता है, एक्साइटमेंट स्टार्ट होता है, कुछ कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है, एंड सो दैट some electrons get themselves free, and those free electrons could roam in the that could move to conduction band, leaving behind some empty space which is positively charged, which we call as holes. तो ये तो holes क्या होता है, ये मैंने बता दिया. क्लियर. तो अब आप देखिए कि इसका इंटेंसिव सेमीकंडक्टर्स में होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया. एट द सेम टाइम आई मस्ट टेल यू द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ इंटेंसिव सेमीकंडक्टर. This is conduction band, valence band. This is conduction band, and this is your EG, gap energy, which is mostly less than 3 electron volt. Okay. तो अब आप समझ सकते हैं कि पहले क्या होता है कि यहाँ पर all the electrons are filled. All the cells are complete. It is totally empty at T equal to 0 Kelvin. It is totally empty, and this is filled energy state. Filled energy state. This is your conduction valence band. तो वैलेंस बैंड आप 0 डिग्री केल्विन में आपने क्या देखा कि ये भले ही इसमें इजी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम हो, बट इसमें कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाता. ये टोटली फील्ड रहता है, फील्ड एनर्जी स्टेट्स, एंड इट इज टोटली एम्प्टी. नो इलेक्ट्रॉन इज देयर. बट इफ टेम्परेचर इज स्लाइटली इंक्रीज, this is still conduction band, and this is still CV, valence band. Then some electrons are found in the conduction band also. That means electrons are found to occupy some of the space in conduction band. And from where electrons move, you can see from where electrons move,
that becomes free space, and that free space is your positively charged space. ये positively charged space, positive hole, which we call as hole, that we have already defined. तो ये जो होता है वैलेंस बैंड से ये होगा जब टेम्परेचर जो होगा ग्रेटर देन 0 डिग्री केल्विन. When temperature is greater than 0 degree Kelvin, then we have such type of situation. That is, some electrons are found to move to conduction band, leaving behind some space. That is your positive hole. Okay, this is how we have said the elementary thing about intrinsic semiconductor. तो intrinsic semiconductor इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है. तो 4 पॉइंट इसमें है. पहला पॉइंट क्या है कि इट इज अ नेचुरल सेमीकंडक्टर. ओके. नंबर 2, एट 0 डिग्री सेल्सियस इट इज बेसिकली एन इंसुलेटर. नंबर 3 क्या है, when temperature is raised greater than 0 degree Celsius, then some of the electrons are found in conduction band also, and that we call as that becomes conductor. That is why it is called semiconductor. But fourth point क्या है कि number density of electrons equal to number density of holes, यानी कि Ne equal to NH. ये भी एक इसका पॉइंट होता है कि नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स. ये चौथा पॉइंट हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का. एंड दिस इज द एनर्जी लेवल डायग्राम. रिमेंबर, this is diagram 1 and this is your diagram 2. Okay, and after this we will discuss what is extrinsic semiconductor. अच्छा, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर बताने से पहले आई मस्ट टेल यू द एग्जांपल्स ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. जैसे आपको मैंने जर्मेनियम को लेकर चले, वैसे सिलिकॉन का भी बिल्कुल वैसे ही होता है. तो देयर आर 2 एग्जांपल्स ओनली. इंट्रिंसिक में 2 एग्जांपल होता है. एग्जांपल ऑफ इंट्रिंसिक, एक जर्मेनियम दूसरा सिलिकॉन. बाकी कंपाउंड वाले भी कोई होते हैं, जैसे गैलियम आर्सेनाइड है, कैडमियम फॉस्फाइड है, या इस टाइप के कई कई अलग अलग चीज़ भी होते हैं. तो उनको भी हम लोग देख सकते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम. बट बेसिकली क्या होता है, एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ बताया, एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है, इट इज नॉट क्लियरली विजिबल. it is this germanium and silicon. और अदर भी क्या होते हैं, गैलियम आर्सेनाइड और इंडियम फॉस्फाइड. They are also natural semiconductors, but they are the elemental semiconductor. They are compoundal semiconductors. Remember, all of them are natural semiconductor. We have not to say that something is imposed. No, it is, they are not extensive, but they are all intrinsic semiconductor. But they are basically not used for theory, but we have to use either germanium or silicon in intrinsic semiconductor. Let us take what is extrinsic semiconductor. Before we discuss extrinsic semiconductor, let me discuss something related to the drawbacks of intrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor के जगह extrinsic semiconductor क्यों जरूरत पड़ता है? Why we use extrinsic semiconductor? Why we use extrinsic semiconductor? Because
there are some limitations and in the working of intrinsic semiconductors. इनके कुछ वर्किंग जो होता है वो आपका प्रॉब्लम करता है. क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? पॉइंट्स हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड लिमिटेशंस ऑफ इंट्रिंसिक semiconductors. So मेरा क्वेश्चन था why we use extrinsic semiconductor? Because there are some limitations in the working of intrinsic semiconductor. And what are the limitations? Number one, that is number of electrons per unit volume equal to number of holes per unit volume. This is one of the drawbacks. There is no dominance of electrons or holes either. We have not to say that both are equal. Number two, the number density is approximately equal to 10 to the power 6 per centimeter cube. Now you can see such as low number density, therefore we cannot expect a large amount of charged particle to conduct electricity. 10 to the 6 per centimeter cube हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं है. Number 3, it cannot make any electronic device. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई भी जो है इससे नहीं बनता है, कोई भी फंक्शनिंग इसमें प्रॉपरली नहीं देखता है इंट्रिंसिक से. तो आपने देखा कि इंट्रिंसिक में कई ड्रॉबैक्स है एंड देयर आर मेनी ड्रॉबैक्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. वी हैव आल्सो सीन द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर and with that we have completed today's lecture and we have said that is why we use extrinsic semiconductor. That means why intrinsic semiconductor is not used. ओके, दिस इज द क्वेश्चन. तो अभी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अभी मेरा चल रहा है. तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने इतना बताया था. मेरा नेक्स्ट लेक्चर में, इन माय नेक्स्ट लेक्चर we will definitely discuss the basic concept of extrinsic semiconductor and we see the basic difference between extrinsic and intrinsic semiconductor. और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में भी कैटेगरी होगा पी टाइप और एन टाइप, उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा. And then in other future lecture we will see the formation of p junction diode and their working. Okay, and so on. With that we may have 3-4 more lecture to complete this chapter. With that we have completed today. Thank you.